Would anyone like to read this? कोई रीडिंग करेगा? ओके लाएगा। चलिए आमना आप पढ़ लीजिए फ्रॉम हियर ही कन्फ्रंटिंग हर, ये लास्ट लाइन ऑफ पेज 6 एंड देन कंटिन्यू ऑन द पेज 7. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. So here is a he. Yeah. Okay. He confronting her. Now look here. You know this woman? You know what she did? Don't you? She. I think I know what you mean. He brutally. It's brutally, na, ma'am? Brutally. Yeah. Brutally. You know what I mean, all right? She murdered my wife and daughter. She, frankly, she was not convicted of murder. She was not even charged with murder. He, scornfully, no, they called it manslaughter. But you know Manslaughter. what I call it? Manslaughter. But you know what I call it? I call it murder. Planned, deliberate, heartless, cruel murder. She desperately, it was an accident. He, not much of an accident. It an accident. There is an element of chance, but in what your precious what's that word, ma'am? Judy O'Kentuck. Judio Cantab did. There was no chance about it. It was a million to one she would kill someone. She weakly. No, that's not true. He relentlessly. Relentless. It is true and you know it. She was driving at 50. Ma'am, can you please uh, she was driving at 50 miles an hour in a built up area. She pulled out to overtake a bus on a blind man and she was herself running slap into a lorry coming the other way. She had a choice. She could ram the lorry and kill herself, or she could soar onto the pavement and kill two innocent pedestrians. She did not hesitate. It was her life or theirs. She mount, she mounted the pavement, and she's alive today. And my wife and little girl are dead. She, very much moved, covering her face in her hands. I'm very sorry. How can I say how can I say how sorry? He, relentless. And do you know why she was driving so criminally fast? She was drunk. She, protesting. She was not drunk. He, beating her down. She had been to a cocktail party and she was driving fast to a bed for a bet. One of her routine set had weighed her 5 pounds. She would not drive from Stanthorpe Cross to the coast in under 15 minutes. You know the road, you know the distance, you know the bends and the blind corner and the traffic on the road. You know it can't be done reasonably in much under half an hour. You can't tell me it was not deliberate murder. Thank you so much, Amna, for a very good reading. Thank you, ma'am. Thank Okay. you, ma'am. So, firstly, I would like to give you a brief summary that what we studied before. So basically, you didn't attend our first class. So in our first class, we discussed how this is a total scene. This is a scene of a railway station that, and the weather is kind of stormy and rainy. और वहाँ पे जो है सिर्फ दो characters हैं in that railway station waiting area. That is a woman and a man. ठीक है. और जो woman है they and a man, they are having a conversation about
वेयर आर दे गोइंग एंड व्हाट आर दे गोइंग फॉर। तो जो आदमी होता है वो औरत को बता रहा होता है कि पूछ रहा होता है कि डू यू नो एनी जूडी ओकेंटअप। तो वो कहती है कि यस आई डू नो हर। सो वो उस जूडी ओकेंटअप के बारे में सवालात करना स्टार्ट कर देता है। शी बिकम सस्पिशियस कि वो इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि आप जूडी ओकेंटअप से क्यों मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है कि जूडी ओकेंटअप से मेरा कुछ बिजनेस है। सो वो कहती है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको इसके बारे में इतना जानना जरूरी तो नहीं है, आपको सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है उसके साथ, और मैं उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ ही जानता हूँ, एंड आई ऑलरेडी नो कि वो किस तरीके की औरत है। ठीक है, तो उसके ऊपर इनकी बात स्टार्ट होती है कि यहाँ पे जो अब वो आ रहा होता है ना, कि यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट लाइन के ऊपर द वुमेन इज सेइंग एंड यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस दिस कंटेम। यहाँ पे जो आदमी है वो कह रहा होता है कि एक दो तरीके की औरतें होती हैं, एक अच्छी एक बुरी। तो उस पे ये औरत कहती है कि आपको पता है कि मिसेस जूडियो कंटेम किस तरीके की औरत है। तो वो फिर यहाँ पे कहते हैं कि नाउ लुक हियर, यू नो दिस वुमन, यू नो व्हाट शी डिड, डोंट यू। तो वो कह रहा होता है आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम जानती हो कि उसने क्या किया है। तो फिर वो कहती है कि आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन। फिर वो आगे अपनी कहते हैं कि शी मर्डर्ड माय वाइफ एंड डॉटर। सो व्हाट डिड जूडियो केंटअप डिड, शी मर्डर्ड हिज वाइफ एंड डॉटर। सो यहाँ पे जो औरत है वो जूडियो केंटअप को डिफेंड कर रही है कि नो शी डिडंट मर्डर, क्योंकि मर्डर जो था पुलिस ने ऐसे इस पूरे सानहा को एज ए मर्डर कन्विक्ट नहीं किया, एज ए मर्डर डिक्लेयर नहीं किया। तो आदमी कहता है नो इट इज अ मर्डर फॉर मी। वो कहता है वो लोग जो भी बोले इट वाज अ मर्डर। तो मैन स्लॉटर का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, नो दे कॉल्ड इट मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर का मीनिंग बेसिकली होता है कि व्हेन यू किल समवन एक्सीडेंटली या बेख्याली में आपसे उस बंदे की मौत हो जाए। तो जो लॉ है दैट डजंट चार्ज यू फॉर मर्डर, बट यू हैव टू पे अ स्मॉल पेनल्टी, एंड आपको जेल में कुछ टाइम गुजारना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। यू डोंट गेट अ लाइफ टाइम सेंटेंस, जैसे कि मर्डर में आपको मिल जाती है कि आप किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाता है, एंड समटाइम्स आपको जो है फांसी लगा दी जाती है। तो यहाँ पे जूडियो केंटक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको जो है मैन स्लॉटर के जो है वो केस में डाल के उसको रिहा कर दिया गया था कुछ टाइम बाद। सो जो औरत है वो आगे से कहती है इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये पूरा जो हुआ वो एक्सीडेंट था। तो यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं कि वो किस बारे में बात करे, क्या हुआ था। तो यहाँ पे वो आदमी आके कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक एक्सीडेंट हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस थे कि वो इस एक्सीडेंट जो है होने से बच जाता, बट ऐसे नहीं हुआ, ये जो था एक प्री प्लान मर्डर था। तो वो जो है औरत कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो आदमी आगे से उसे बता रहा होता है कि क्यों ऐसा नहीं है। वो कहता है कि इट्स ट्रू एंड यू नो इट। सो वो कहता है कि शी वाज ड्राइविंग एट अ 50 माइल्स इन एन आवर इन अ बिल्ड अप एरिया। वो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रही थी, दैट इज अ वेरी फास्ट स्पीड इन अ बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया मीन्स कि वहां पे काफी घर थे और वो काफी मतलब चहल पहल वाला इलाका था। मतलब दे हैड ट्रैफिक ओवर देयर, पीपल वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। पेवमेंट जो यहाँ वर्ड यूज किया बेसिकली फुटपाथ के लिए होता है। She pulled out to overtake a bus on a blind bend and she saw herself running onto slap into a lorry the other way. अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि जैसे ये एक लेन थी एंड दिस वाज द अदर लेन। सो जूडियो कैंटअप वाज हियर, और यहाँ जो था उसके आगे एक बस चल रही थी। ठीक है, एंड देयर वाज दिस पेवमेंट हियर जहाँ पे उसकी वाइफ और डॉटर जो है वो चल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो स्पीड में आ रही थी एंड शी ओवरटेक दिस बस। जब वो यहाँ से इस तरफ साइड पे आई तो यहाँ पे वो रॉन्ग वे पे आई एंड शी सॉ कि यहाँ से एक जो थी गाड़ी आ रही थी, लॉरी। लॉरी इज लाइक लोडिंग ट्रक होता है ना, जिसके पीछे सामान रख के लेकर आ रहे होते हैं, उसको लॉरी कहते हैं। सो वो यहाँ से ऑपोजिट वे से आ रहा था, और जब इसने देखा कि यहाँ से वो आ रहा है तो इसने क्या किया, उसको डॉच करने के लिए शी यूज द पेवमेंट। उसने अपनी गाड़ी कहाँ चढ़ा दी, फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दी, किलिंग टू इनोसेंट पीपल। कौन थे वो पीपल, द मैन एंड डॉटर ऑफ दिस मैन, द वाइफ एंड डॉटर ऑफ दिस मैन। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो कहती है कि वो कह रहा होता है कि वो चाहती तो वो जो है वो अपने आप को खुद खुद मर सकती थी इंस्टेड ऑफ दोज इनोसेंट पीपल।
वो चाहती तो उस लॉरी के अंदर खुद अपने आप को जो है अपनी गलती को ओन करके उस लॉरी में वो खुद टक्कर लगवा के खुद मर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो है वो फुटपाथ पे गाड़ी चला दी जहां पे गाड़ी चलाने की इजाजत भी नहीं है, और वहां पे उसने दो चलते इनोसेंट पीपल राहगीरों को मार दिया उसने अपनी गाड़ी के नीचे लाके। तो वो कह रहा है कि वो फिर जो है औरत को अपनी मतलब उसको गलती का एहसास हो रहा होता है जूडियो कैंटअप की, तो वो कहती है कि आई एम वेरी सॉरी, आपको मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी सॉरी हूँ। देन वो आदमी गुस्से में कहते हैं कि डू यू नो व्हाट इट वाजंट, मतलब व्हाई वाज शी ड्राइविंग सो फास्ट, शी वाज ड्रंक। वो कह रहा होता है कि ये मर्डर भी नहीं था, और वो इसकी इतनी तेज गाड़ी चलाने की वजह क्या थी, क्योंकि वो उसने शराब पी रखी थी। वो आगे से डिफेंड करती है कि नहीं उसने नहीं पी थी, तो वो कहते हैं उसने पी थी क्योंकि वो कॉकटेल पार्टी में थी जहां उसने अपने दोस्त से बेट लगाई थी कि उसको 5 पाउंड्स वो देगा अगर वो स्टेन थ्रोप के क्रॉस से लेके कोस्ट तक 15 मिनट के अंदर का रास्ता पूरा कर सकती है। जो जो रास्ता 1.5 घंटे का रास्ता है, वो उसने बेट लगाई थी कि वो 15 मिनट में पूरा करके देगी। फॉर व्हाट? जस्ट फॉर 5 पाउंड्स। और उसने इस बेट के लिए इन अ कॉकटेल पार्टी ऑब्वियसली देयर इज बेवरेजेस दैट आर दैट इंक्लूड अल्कोहल, ठीक है, तो वहां पे मोस्टली शराब वगैरह सब चल रहे होते हैं, तो उसने वहां से बेट लगाई थी एंड शी वाज ऑब्वियसली शी ड्रैंक सम, सो टेक्निकली शी वाज ड्रंक। सो उसने जब भी गाड़ी चला रही थी, एक तो शी वाज ड्राइविंग फास्ट, सेकेंडली शी वाज ड्रंक, शी वाज नॉट इन हर सेंसेस। उसने अपने आप को बचाने के लिए कहाँ गाड़ी चला रही थी? पेवमेंट के ऊपर, एंड शी किल्ड 2 innocent पीपल। तो यहाँ पे जो आदमी है वो इस बात पर अड़ गया है कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, उसने जानबूझ के ये किया, वो चाहती तो इस एक्सीडेंट को होने से बचा बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को बचाया और 2 लोगों की जान ले ली। ठीक है, इसके आगे से रीडिंग करो। मैं करूँ? या The police did not call it murder. I call it murder. And so do you. In your heart, you know it was murder. What were my wife and child to her? Absolute strangers. You spoke just now about meeting people once for a moment and never seeing them again. Uh, मिसेस Miss Mrs. Juddy, जूडी ओकेंटा। uh, Mrs. Judio Kentup, met my wife and daughter for one split second and then crushed the life out of them. I said they met, but they had their backs to her. They did not even see her. She rising. How do you know she saw them? She said at the trial that she didn't see them, but she saw them all right. She had to choose between her life or theirs, and she chose to murder them. She, how can you be that sure? How can you be sure of that? It must have all happened in a flash. Scornfully. Her, काउंसिल। her, her, काउंसिल। her counsel told her to say she did not see them. He made great point of it. That was why she got away with only 18 months in Goa. गोल। She in goal. मैम मेरे शायद ना पेज थोड़ा हाँ, फोल्ड है ये तो नजर पेज नहीं थोड़ा आ रहा। कटा हुआ है। जी. She 18 months in prison. She served that sentence, didn't she? He gloating. She hadn't my option. शी हैडंट She एनी ऑप्शन। she's she hadn't any option. She's had her punishment. I'm not trying to excuse her. I'm not saying it was not criminal folly on her part to drive as she did. I'm not excusing her. Be बट but she's had her punish. But she's had her punishment. He she was not. Her punishment is coming to her. A few months in prison for crushing an innocent woman and child so to death. They stare at each other. He bitter, she fascinated. Then he turns away. She unable to change her subject. And when you meet this Mr. This word मिसेस is so difficult. Of मिसेस ओकेंटा। Mrs. O. Mrs. ओकेंटा। O'Kent. या One ma'am again. O.
Can Tub. tub. Oh, Yeah. okay, thank you. Mrs. O'Kentup, what do you propose to do? He, uh, calmly, I shall kill her. She, widely, kill her? No, you can't do that. He, I haven't quite made up my mind how I want to do it, in the most painful, the word, Way. way. Painful way. She, will you give her any warning? Painful way. She, will you give her any warning? He, naturally she will know why she is being punished. Okay. So, Enough? what is happening? Stop right here. So what is happening here कि आदमी जो है वो persistent है कि that is a murder and the woman is telling him that it is not a murder, it is an accident. ठीक है. So इससे पहले जो है वो उनकी बात हुई होती है कि अबाउट कैजुअल मीटिंग्स. सो उसमें जूडियो केंटअप जो है वो मतलब उस आज जो औरत है वो कह रही होती है कि वी मीट पीपल इन आवर लाइफ टाइम कि हम उनसे थोड़े टाइम मिलते हैं एंड देन वी फॉरगेट देम. वी मीट टोटल स्ट्रेंजर्स, हमारी उनसे कभी बात हो जाती है कभी नहीं होती एंड उसके बाद वो कभी हमें पूरी जिंदगी में वो लोग नजर नहीं आते. तो यहाँ पे उस आदमी ने वही वाली बात को पॉइंट आउट किया एंड ही सेड कि यू मेंशन दोज मीटिंग्स and it was for a split second that Judy Cantor met my wife and daughter. She did and मगर उन्होंने मतलब जूडियो कैंटअप ने मेरी बीवी और मेरी बेटी को देखा था मगर मेरी बीवी और मेरी बेटी ने जूडियो कैंटअप को नहीं देखा था क्योंकि उनकी जो बैग्स थी उनका जो मुंह था वो दूसरी साइड पे था और गाड़ी पीछे से आ रही थी. सो हाउ वर दे सपोज टू सी हर. सो जो गाड़ी चलाने वाला था ऑब्वियसली उसने देखा होगा. सो औरत कहती है हाउ आर यू श्योर कि उसने जो है जूडियो केंटअप ने उन दोनों को देखा होगा चलते हुए. तो वो कहता है मतलब नहीं देखा होगा चलते हुए, शी डिडंट इवन सॉ हर. तो वो कहता है कि जब ट्रायल हुआ था जो जूलियो केंटअप ने अपने ट्रायल के अंदर ये बात बोल दी थी कि मैंने जो है उन दोनों को चलते हुए राहगीरों को नहीं देखा था एंड इट वाज कंप्लीट एक्सीडेंट. जो के डिफेंस था उसने भी ये बात बोली थी जिसकी वजह से जूलियो केंटअप ने सिर्फ कितने महीने जेल में गुजारे थे, ओनली 18 मंथ. तो आदमी समझता है कि जो 18 मंथ उसने जेल में गुजारे हैं ये उसके लिए काफी नहीं है. ठीक है. सो जो औरत होती है वो कहती है नहीं उसने अपनी पनिशमेंट गुजार ली और उसको इस बात का दुख है कि उसने जो है दो इनोसेंट लोगों की जान ली. और मैं उसको डिफेंड नहीं करी, मैं जानती हूँ कि उसने गलत किया, उसने अपना टाइम जो है जेल में गुजार लिया और उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है. अब वो आदमी कहते हैं कि नहीं उसने नहीं की है. तो फिर वो जो है वो थोड़ी देर मतलब टॉपिक चेंज करना चाह रही होती है. तो वो कहती है कि आप जब इस जूडियो कैंडअप से मिलोगे तो आप क्या करने वाले हो. तो वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू किल हर. तो वो एकदम हैरान हो जाती है. शी सेज के नो यू आर नॉट गोइंग टू किल हर. सो ही सेड के आई हैवंट क्वाइट मेड अप माय माइंड. वो कहते हैं मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं उसे कैसे मारूंगा लेकिन आई विल किल हर इन द मोस्ट पेनफुल वे. सो वो कहती है कि आप उसे मारने से पहले कोई वार्निंग दोगे. तो वो कहता है कि नहीं मैं उस को जब मारने जाऊंगा तो उसे ऑलरेडी पता होगा कि मैं उसे क्यों मारने आया हूँ. स्टार्ट रीडिंग. Yes. She, after pause, controlling herself with difficulty. So tomorrow morning you are going out to commit murder? He, to execute justice, but I don't think I shall wait till tomorrow morning. I shall kill her tonight. She, alarmed, tonight? He, I may not have very much time. There is a long phase. He stares grimly at her and then away. She meets his glance in horror, but when he looks away, she pulls herself together. She, brightly, but why tell me your plans in advance? If I tell the police, he, I have thought of that, turns on her suddenly and advances Malevolently. malevol- male- malevolently. She shrinks back in terror and is about to scream. But his whole expression changes. He smiles cheerfully, stretches out his hand to the fire, and speaks in a friendly way. Our meeting is almost over. Was that a nice little story to pass the time? We could have spent these 20 minutes in looking at each other, with which would have been pleasant enough for me, but not much fun for you. So I thought I had tell you a story to keep you amazed, amused. Amused.
She, amused. She faintly recovering her composure. How did you know I wanted to be amused? He bluntly. All ladies like to be amused. That's what men are for, to amuse the ladies. She, between laughter and indignation. Your idea of an amusing story is too violent for my taste. He, smiling down at her, con, uh, confessed to Confess. me that you loved it confess to me that you loved it. The little shivers of delight were running up and down your spine all the time. She, no, I didn't enjoy it. You see, the story is partially true. There really is a Mr. Mrs. Judio Ocantab, Mrs. Judy Mrs. Judio Oquendo. Mrs. Judy Ocantab at Stainthorpe. I do know her. She did kill a woman and child in a motor accident driving fast for a pet. She did serve 18 months in prison. He serious again, I know. She, as for the husband, you may be He. you may be he for all I know. You may be he for all I know. He with grim emphasis, I am. ओके सो यहाँ पे जो है उसके बाद क्या होता है कि जो औरत होती है आफ्टर लॉन्ग पॉज कंट्रोलिंग हर सेल्फ डिफिकल्टी, तो वो उसके साथ ही पूछती है थोड़ी देर के बाद, रुकने के बाद, कि आप कल जो है वो मर्डर कमिट करने जा रहे हो? तो वो कहता है कि नो, टू एग्जीक्यूट जस्टिस, मैं मारने नहीं जा रहा हूँ, मैं इंसाफ करने जा रहा हूँ। एंड वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कल सुबह का इंतजार करना चाहिए, मैं आज रात ही जाके उसको मार देता हूँ ना। तो वो औरत कहती है आज रात? तो मतलब अलार्म्ड होके, हैरान परेशान होके, सो ही सेड के आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है सीन बताया कि देयर इज अ लॉन्ग पॉज, थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है, वो उसके ऊपर देख रहा होता है, मतलब थोड़ी सी गुस्से की तरफ देख रहा होता है, वो उसको देख रही होती है, खौफ की आलम में उस आदमी को देख रही होती है, और फिर जो है अपने आप को ना ऐसे करना चाह रही होती है कि उसको ना पता चले कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो कहती है कि अच्छा लेकिन जो भी है आप मुझे अपने प्लान पहले से क्यों बताएं, क्या पता कि मैं जाके पुलिस को बता दूं। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करे, तो वो आदमी जो है कहता है कि आई हैव थॉट ऑफ दैट। ठीक है, वो कहता है मैंने इसके बारे में सोचा है, और वो उसकी तरफ मुड़ता है जाके, थोड़ी सी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, और अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाते हैं, वो हंसना स्टार्ट कर देता है, उसका फेस जो है जो पहले गुस्से में था अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, काम हो जाता है, और वो अपने हाथ जो है आगे आंख के आगे आगे करके ना उसे कह रहा होता है कि हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। wasn't that a wasn't that a nice little story to pass our time with? वो कहते हैं क्या कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई ना मैंने आपको, हमारा टाइम भी कितना अच्छे से पास हो गया, आप अम्यूज भी हो गई। तो वो फिर औरत कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे अम्यूज होना था, मुझे इस चीज की जरूरत थी? तो वो कहता है कि ऑल लेडीज लाइक टू बी अम्यूज्ड एंड मेन आर देयर टू अम्यूज। तो यहाँ पे एक छोटी सी जो है फ्रेंडली चिट चैट हो रही होती है, जो हमारा जो पूरा सीन चल रहा था, इट वाज बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ फियर, हॉरर एंड अम्यूजमेंट। लाइक उसके अंदर जो थे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे जो वो औरत थी वो हैरान और परेशान हो गई थी उसकी बातें सुन के, बट वो जो आदमी था उसने पूरी बात का जो है वो फील ही चेंज कर दिया। उसने क्या कि वो एकदम गुस्से से जो है फ्रेंडली टोन के अंदर आ गया, औरत भी जो है परेशान हो गई, वो औरत भी थोड़ा काम होना स्टार्ट हो गई कि अच्छा जो है ये सब जो है ये मजाक कर रहा था, ये इसने मुझे स्टोरी सुनाई है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि ऐसी जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई है वैसे असल में ऐसा हुआ है। तो एक जूडिया केंटअप है जिन्होंने जो है 2 लोगों को मारा है। तो वो कहते हैं मुझे पता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि आप जो है वो 2 जो लोग मरे हैं, कत्ल हुए हैं, उनके जो है वो हस्बैंड है उस औरत के, और उस बेटी के जो बाप हैं आप। तो वो कहता है हाँ मैं हूँ। आगे पढ़ो। She. So everything is story except that you have come here to kill Mrs. Ocantab. He, with quiet intensity, that's true too. She, realizing that he has been playing with her, rising her to her feet violently. I can't stand this. I shall scream. He, his his back to the door. No one will hear you.
If anyone does, he will only take it for the wind. Listen. He moves slightly forward and still with back to the door and his eyes fixed on hers, opens it slightly. The screaming wind and lashing rain confirm his word. He shuts the door again. Nothing you can do will save her if you try to me away. He pulls a revolver from his pocket and points at her. If you try, sorry, she recoils. There is a rattling at the door behind him, and he moves forward, pocketing the weapon, but keeping his hand on it. He f- uh, he frowns. He frowns Threateningly. at her uh, as the as the porter pushes the door open and comes in. Hello, Trent Singer signaled Porter. No, sir, not yet, sir. I have just come along to tell you that the express is running a bit late. It would not be until 9:05, so you need no, so you Needn't. so you needn't so you Hmm. needn't turn out in the rain yet a while. He politely. Thanks for letting us know, Porter. Are you all comfy here? Yes, quite thank you. The porter turns to go. She is stepping forward. Porter, pausing and looking around at her, obviously of the man who behind his back is making warning gestures at her. Yes, love. Is there a restaurant car on the express? Porter, there is love, but the staff has packed up and gone home before the express reaches here. Gone home? Porter, in a manner of speaking, love, chuckles and goes out. ओके, सो यहाँ पे अब क्या हुआ कि वो औरत जो है वो उसको कहती है कि अभी तक तुमने जो मुझे सारी बातें बताई वो सब ट्रू थी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू किल हर। तो वो कहता है कि नहीं, वो भी सच है, मैं उसे मारूंगा। सो वो जो है वो परेशान हो जाती है, वो कहती है कि वो गुस्से में उठती है, खड़ी हुई कहती है कि आई कांट स्टैंड दिस, आई आई शैल स्क्रीम। तो वो क्या कहता है, वो जो है अपनी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ करता है और कहते हैं नो वन विल हियर, तुम्हारी आवाज किसी को भी नहीं जाएगी, और अगर कोई तुम्हें सुन भी लेगा तो उसे लगेगा कि ये जो है जो स्टॉर्म है उसकी विंड की आवाज है। तो वो क्या करता है, ही मूव स्लाइटली फॉरवर्ड एंड स्टिल विद हिज बैक टू द डोर एंड हिज आईज फिक्स्ड ऑन हर ओपन जस्ट स्लाइटली। तो वो जो है वो उस औरत को देखते देखते घूरते घूरते थोड़ा सा डोर को खोलता है। That screaming wind and the lashing wind confirms his word। अब जो आवाज बाहर से आ रही होती है ना, वो तेज हवाओं की और बारिश की, तो वो जो है उसके अल्फाजों को जिसने बोला होता है कि तुम्हारी चीख किसी को भी नहीं सुनाई देगी, और अगर सुनाई भी देगी तो वो उसे समझेंगे कि ये वेदर की आवाज है। तो उस वाली बात को कंफर्म कर देता है। वो दरवाजा बंद कर देता है, तो फिर वो कहते हैं नथिंग यू कैन डू विल सेव हर, तुम जो भी तुम कर लो वो उससे जूलियो कैंडा को मुझसे बचा नहीं सकता। तो फिर जो है वो औरत जो होती है थोड़ा पीछे होती है, इतने में क्या होता है, दरवाजा खुलता है और पॉटर अंदर आ जाता है। तो वो आदमी से कहते हैं हेलो, ट्रेन सिग्नल, क्या ट्रेन ने कोई सिग्नल दिया? पॉटर की बात कहते हैं कि नो सर। वो कहता है कि अभी तक ट्रेन नहीं है, लेट हो जाएगी, 9:05 तक आएगी। तो आप लोग को परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे वेट करें। और तो वो कहता है कि थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो। तो फिर पॉटर उससे पूछते हैं कि आर यू ऑल कम्फी हियर? सो आदमी कहता है यस थैंक यू, और फिर थोड़ी देर बाद जो है औरत आवाज लगा दी पॉटर, वो उसे रोकती है। और फिर पॉटर उसी तरह मुड़ के देखता है, और पीछे से जो आदमी खड़ा हुआ होता है ना, वो उससे सिग्नल कर रहा होता है, वार्निंग के जेस्चर्स, लाइक कि नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, कुछ मसला नहीं है। तो वो कहता है, पॉटर फिर भी पूछता है उस औरत से कि यस लव। सो पॉटर जो होता है वो उस औरत को लव करके लाइक डिनोट कर रहा होता है, पुकार रहा होता है उसे। सो वो औरत जो है बजाय इसके कि वो उसको कुछ बात बताए कि आई एम थ्रेटन्ड बाय दिस मैन, कि ये आदमी मुझसे ऐसी बात कर रहा है ये वो, और उसको उसके बारे में बताया, वो क्या पूछती है कि इज देयर रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस? तो वो कहता है कि हाँ है, मगर सब लोग जो है वो पैक करके घर चले गए हैं। तो वो कहती है कि गॉन होम? तो वो कहते हैं इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव, और फिर वो चला जाता है वहां। ठीक है, उसके आगे से पढ़ो। He is stepping he is stepping swiftly to the door and putting his back to it. So we have 5 more minutes. She desperately. What do you purpose to do with them? It's just the amount of time I need for killing you. She with faint surprise. Me? He. Yes, you, Mrs.
Mrs. Judy O'Kentuck, she Agitated. agitated. Oh, agitated. Oh no, you can't mean that. I do mean it. Produces revolver and points it at her. You killed my wife and daughter. You took their lives and wrecked mine. Having the right to take yours? She, meekly, yes, perhaps you have, but my punishment have been very bitter. Uh, but my punishment have been very bitter, more bitter than you can imagine. He scornfully. A few months in a comfortable prison. Go down on your knees and beg for your life. You don't understand that was only part of it. What do you suppose I thought of during those long months in prison? He blinked bitterly of how soon you could get back to your cocktail parties, I expect. She, all the time I had one picture in my mind. I swear you, I swear to you that I did not see them before this match, but I saw them afterwards. You were spared that, but I see it always. It is with me whenever I am and whatever I am doing. I can see it now and more vividly than see you. That awful scene will haunt me as long as I live. That is real punishment to have ever before my eyes, the picture of what I have done. Till I die, often I think that I could not bear it. Shirks, I could not bear it. Hiding her face in her hands, can you punish me more? He, is that no? Is that how you beg for your life? She, half hysterical, half hysterical. No, I beg for my death. She claps her hand towards him. Kill me. Blot out the picture which is always before my eye and which I cannot endure. He doubtfully. Do you mean that to kill you would be merciful? To allow you to leave would be my true revenge? She, imploring. Yes, yes, kill me. He, lowering the revolver, I never thought of that. She desperately, but it's true. If you really hate me, condemn, condemn, Condemn. condemn, condemn to leave, condemned to leave. She kneels again, clasping his arms, imploringly, impro, Yeah. what's that one? Im, Imploringly. imploringly. Yeah. Imploringly, Her away. he pushes her away, and she collapses on the floor, sobbing. Yes, you are right. It would be greater punishment to leave. He puts on his Hat. head, on his hat and coat, pockets the revolver, and walks out, closing the door behind him. As soon as he is gone, she springs to her feet, turns to the door, and put her finger to her nose at him. While she is standing thus, he opens the door suddenly, sees her, raises Her the revolver and fires. her revolver, The revolver. raises revolver and fires. Raises the revolver and fires. She falls dead. He pockets the revolver again, picks up his suitcase, and hurries out. Okay, so what happened Notes? after the Potter left? कि he says कि अभी हमारे पास और 5 मिनट है, तो वो पूछती है कि अब इस 5 मिनट के साथ आप क्या करने वाले हो, तो वो कहते हैं कि मैं आई एम गोइंग टू किल यू। तो वो परेशान हो कहती मी, वो कहते हैं यस यू जूडियो कैंटअप। तो उसे पता चल चुका होता है बिकॉज इन द बिगिनिंग देयर वाज अ स्लाइट सिनेरियो जहाँ पे इसके पास एक सूटकेस होता है इस औरत के पास एंड दैट हैड अ टैग। ठीक है, तो जब वो आदमी अंदर आ रहा होता है तो वो जो है वो टैग देख लेता है। आते ही वो सबसे पहले वो टैग देखता है एंड देन व्हेन द दिस मैन स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन हिज स्टोरी टू द वुमेन, तो वो औरत क्या करती है, वो जल्दी जाकर ना वो टैग हटा छुपा देती है। वो क्यों छुपाती है, क्योंकि शी वांट्स टू हाइड हर आइडेंटिटी, कि उसे ना पता चला कि असल में जूडियो कैंटर मैं ही हूँ एंड ही इज टॉकिंग टू मी ऑल द टाइम। ठीक है, तो आदमी को तो पहले से पता चल चुका होता है कि ये जूडियो कैंटर है। तो यहाँ पे वो वाला जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिवील हो गया कि दैट मैन ऑलरेडी न्यू कि शी दिस वुमेन इज जूडियो कैंटर जिससे वो मिलने जा रहा था। और उसने उसको ये सारी बात इसीलिए पता बताई ताकि उसको पता चले कि वो उसे क्यों मारना चाहते हैं। तो
फिर वो औरत जो होती है वो परेशान होकर कहती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो वो कहते हैं यस आई कैन, तुमने मेरी बीवी और उसको मारा, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ अपनी पनिशमेंट पूरी कर चुकी हूँ मैंने। वो कहते हैं नहीं, तुमने जो है अपनी जेल में जितना भी टाइम गुजारा बड़े कंफर्टेबल होके गुजारा है, तुम्हें वहां पे सारी आसाइशें मौजूद थी, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपनी पनिशमेंट पूरी की है। तो वो यहाँ पे आके कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं उस टाइम को तक क्या सोच रही थी। तो वो आगे sarcastically कहते हैं हाँ मुझे पता है, यही सोच रही होगी कि वापस अपनी पार्टीज में कैसे जाओगी तुम। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये जब तक मैं उस जेल में थी मेरे दिमाग में उस औरत की और उस बच्ची की पिक्चर थी, एंड आई वाज ऑलरेडी हर्टिंग, और मुझे अपने किए हुए पछतावा था, और मेरे दिमाग में जो उनकी पिक्चर थी मुझे हर वक्त हर टाइम पे जो वो पिक्चर अपने जहन में याद रहती थी, और मुझे उससे दुख होता रहता था, मुझे गिल्ट होता था कि मैंने जो है एक दो इनोसेंट लोगों की लाइफ ले ली। ठीक है, यहाँ पे जो है वो उसने ये बोला कि उन लोगों की जो पूरी, मतलब उनको मारने का जो पूरा था मेरा इरादा नहीं था, मगर मैंने उन्हें मार दिया। उस बच्ची की और उस औरत की जो मेमोरीज थी मेरे दिमाग में थी, एंड दे हर्ट मी ऑल द टाइम। तो वो आदमी कहता है कि तुम अपनी जिंदगी की मुझसे भीख नहीं मांगोगी। तो वो कहती है कि नो। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी की भीख तुम मुझसे ऐसे मांगोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मारो, ताकि मेरे ये जो अजियत है जो मेरे दिमाग में उस ये पिक्चर है जो मेमोरी है ये खत्म हो जाए। तो वो आदमी जो है परेशान हो जाता है, वो कहता है कि सच में तुम, मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने उन लोगों के बारे में